गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। आपके गवर्नेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है वो स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया का निकाल दिया गया है। अब चाहे इसको जो है वो रिलीज़ किया हो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन द्वारा, लेकिन एक्चुअल में इसको जो है वो आपके इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव जो है वो फॉर्मुलेट करता है। ठीक है। तो इस इंडेक्स के मुताबिक पुडुचेरी जो है वो टॉप पर आया है। उसके बाद लक्षद्वीप और गोवा आए हैं टॉप स्लॉट्स में इन कंपोनेंट्स ऑफ लाइक पर्सनल फ्रीडम, चॉइस, शेल्टर, वाटर एंड सैनिटेशन। अब जो ये इंडेक्स है, एक्चुअली ये ग्लोबल लेवल पर भी ऐसे ही सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स निकाला जाता है सिंस 2013। उसी के ऊपर ये इंडिया में डिज़ाइन किया गया है। अब उस ग्लोबल लेवल पर अगर हम 2022 में देखें तो इंडिया की रैंक 110 आया है। इस करंट जो इंडिया की रिपोर्ट है इसमें ये कहा गया है कि एजॉल जो है आपके मिज़ोरम में, सोलन हिमाचल प्रदेश में, शिमला हिमाचल प्रदेश में, ये 3 टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में देखें तो 27 आउट ऑफ 112 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा उन्होंने स्कोर किया है। जम्मू कश्मीर के 40% से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हाई सोशल प्रोग्रेस के कैटेगरी में आते हैं। ये इंडेक्स जो है ये एक होलिस्टिक मेजर दे रहा है कंट्री के सोशल प्रोग्रेस का नेशनल और सब नेशनल लेवल पर। बेसिकली इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो 3 क्रिटिकल डायमेंशंस में जो है वो बांटे गए हैं: बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग, अपॉर्चुनिटी। जिसके जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे बेसिक ह्यूमन नीड्स में न्यूट्रिशन आता है, बेसिक मेडिकल केयर आता है, वाटर सैनिटेशन आता है, पर्सनल सेफ्टी आता है, ऐसे ही एटसेट्रा। सो अब जो ये है इसमें 6 टीयर्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस जो है वो नोटिफाई की जाती है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्कोर्स में। टीयर 1 मतलब सबसे हाई सोशल प्रोग्रेस है। टीयर 6 में अगर कोई आता है तो मतलब सबसे लो सोशल प्रोग्रेस है वहाँ पर। अब बेसिकली ये हमारे को ब्रॉड पिक्चर देता है कंट्री में सोशल प्रोग्रेस की। पॉलिसी मेकर्स को ये गाइड करता है कि कैसे वो अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, किस कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पर फोकस रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस इंडेक्स के थ्रू देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात का वाडनगर टाउन, मोधेरा का सन टेम्पल और ऊना कोटी जो है आपका त्रिपुरा में, वहाँ के रॉक कट स्कल्पचर जो हैं उनको टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है इंडिया ने नॉमिनेट किया है। तो बेसिकली जब इंडिया ने नॉमिनेट किया है इसको जो है, अब जब तक यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी जो है वो इसको रिकग्नाइज नहीं करेगी तब तक ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो नहीं मानी जाएंगी। तो अगर हम यूनेस्को के बारे में देखें तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। 1945 में इसको फाउंड किया गया था। तो कुछ 5 इसके की प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर ये काम करती है: एजुकेशन, नेचुरल साइंसेज, सोशल और ह्यूमन साइंसेज, कल्चर, कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन। बेसिक मेन इसका मोटिव अब ये रह गया है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको 2030 तक अचीव करे। वर्ल्ड लिटरेचर को ट्रांसलेट करना, डिसेमिनेट करना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की एस्टैब्लिशमेंट करना, प्रोटेक्शन करना, जो भी आपके कल्चर को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को काम करता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू की होती हैं और इसको 1972 के कन्वेंशन के अंडर प्रोटेक्ट किया जाता है। 3 तरह की जो है ये कैटेगराइजेशन की जाती है साइट्स की। एक तो कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं, फिर नेचुरल इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं, और कुछ ऐसी साइट्स भी होती हैं जो कल्चरली भी इंपॉर्टेंट है और नेचुरली भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको मिक्स्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में डाला जाता है। अगर हम इंडिया में देखें तो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 32 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स्ड साइट है। अब हम देखते हैं सन टेम्पल एट मोधेरा। मोधेरा आपको याद होगा, अभी हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया है। गुजरात में मोधेरा डिस्ट्रिक्ट, मोधेरा में जो आपका जो विलेज है उसको 100% जो है सोलर विलेज बना दिया गया है। अब यही मोधेरा में जो ये आपका सन टेम्पल है ये पुष्पावती रिवर पर लोकेटेड है। इसको भीमा वन ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ने बनाया था। मारू गुर्जर आर्किटेक्चर स्टाइल में इसको बनाया गया है, जो स्टाइल आपके गुजरात और राजस्थान में जो है वो ओरिजिनेट हुआ चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पर। इसमें मेन टेम्पल श्राइन जिसको गर्भगृह कहा जाता है, एक हॉल है, आउटर हॉल असेंबली हॉल है, सेक्रेड पूल भी है। ईस्ट फेसिंग जो टेम्पल है ये, इसको येलो सैंडस्टोन से बनाया गया है। वाडनगर डिस्ट्रिक्ट जो है या वाडनगर जो है, आई एम सॉरी, जो टाउन है वो लगभग 2700 साल पुराना है। अर्ली हिस्टोरिक फोर्टिफाइड सेटलमेंट रही है ये, हिंटरलैंड पोर्ट भी रहा है, सेंटर रहा है इंडस्ट्रीज़ का जैसे कि शेल्स एंड बीड्स, लेट मिडीवल टाउन भी रहा है। तो बहुत ही पुराना एक तरह से टाउन
टाउन है ये। ऊनाकोटी जो है ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ त्रिपुरा में पड़ता है। यहाँ पर शिवा वर्शिप की जाती है और यहाँ पर जो है इमेजेस मिलती हैं बहुत ही यूनिक स्टाइल में, ठीक है। इसके लिए इसको जो है वो लॉक कट इमेजेस को जो है वो नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। आपके गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उन्होंने सिक्योरिटी जो है उन्होंने टेक्निकल नॉर्म्स जो है वो रिलीज़ किए हैं कि कैसे न्यू सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को जो है वो बैग्स को स्क्रीन करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाएगा एयरपोर्ट्स पे। जो ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है इसको इनिशियली एज अ सेल इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में जो है वो सेटअप किया गया था 1978 में बाय रिकमेंडेशन ऑफ पांडे कमेटी। बट लेटर ऑन इसको जो है वो एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर। स्टैंडर्ड्स ले डाउन करता है, मेजर्स बताता है कि कैसे जो है सिविल फ्लाइट्स की सिक्योरिटी जो है वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे होगी। 4 रीजनल ऑफिसेज हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। शिकागो कन्वेंशन के जो है वो स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करता है और देखता है कि कंट्री में जो सिक्योरिटी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको जो है वो इम्प्लीमेंट सही से किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। सरप्राइज या डमी चेक्स भी कर सकते हैं ये। इनके पास कंटिजेंसी प्लान होते हैं कि इन केस ऑफ एनी कंटिजेंसी कैसे जो है वो सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजिटल इंडिया अवार्ड्स ऑफ 2022। ये आपके जो है गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन है उसको प्लैटिनम आइकन का अवार्ड मिला है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में फॉर जो उनका इनिशिएटिव है डेटा स्मार्ट सिटीज़ एम्पावरिंग सिटीज़ थ्रू डेटा। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स जो हैं वो डेटा शेयरिंग जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन है उन्होंने डेटा शेयरिंग और यूज़ फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी में डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है वो लिया है। इसमें गवर्नमेंट डेटा को ऐसे शेयर किया जाता है कि मिनिस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट्स, सिटीज़ या यूएलबीज़ द्वारा, जिससे कि ठीक से जो है डिसीजन मेकिंग ली जा सके। ये बेसिकली जो एक इनिशिएटिव है स्मार्ट सिटीज़ मिशन का, ये एक रोबस्ट डेटा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है ताकि एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो है सिटीज़ में ली जा सके। जो आपके डिजिटल इंडिया अवार्ड्स हैं ये नेशनल कॉम्पिटिशन है जिसमें कि सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज़ द्वारा ली गए ऐसे डिजिटल सॉल्यूशंस जिससे जो इनोवेटिव हैं उनको जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाता है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है ये अवार्ड जो है वो लेके आते हैं और ये डेटा स्मार्ट्स इनिशिएटिव जो है स्मार्ट सिटीज़ मिशन का, ये डेटा का यूज़ कर रहा है बेटर गवर्नेंस देने के लिए। पीपल प्लेटफॉर्म प्रोसेस स्ट्रेटजी यूटिलाइज़ कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। तो बेसिकली हम 100 सिटी डेटा ऑफिसेज जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर चुके हैं डेटा इकोसिस्टम में और लगभग 50 डेटा पॉलिसीज़ बना चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आरनाला। ये आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली आरनाला शिप को इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी के अंदर। तो ये आपके एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो है प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। ये आपके जो है एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में जो है हेल्प करने वाली है। इसका नाम अरनाला इसलिए रखा गया क्योंकि एक आइलैंड है अरनाला जो कि ग्रेट मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी जो है उन्होंने बनाया था, ठीक है। सो अब जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट जो आपका प्रोजेक्ट है, ये इसमें बहुत सारी शिप्स बनाई जा रही हैं इंडियन नेवी के लिए ताकि जो है अंडर वाटर थ्रेट्स को डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज किया जा सके और इसमें लगभग 80% इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आयुष स्वास्थ्य योजना। गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो एक स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है आयुष स्वास्थ्य योजना। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आयुष एंड पब्लिक हेल्थ और जो है आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इन दोनों कंपोनेंट्स को जो है वो कंबाइन कर दिया गया है और उसके बेसिस पर ही आयुष स्वास्थ्य योजना जो है वो लॉन्च की गई है। बेसिकली ये दो आपकी पुरानी कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स थी लाइक ग्रांट इन एड फॉर प्रमोशन ऑफ आयुष इंटरवेंशन, आयुष ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो असिस्टेंस देना, इनको क्लब करके ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये सब स्कीम को लॉन्च किया गया। और बेसिकली आयुष स्वास्थ्य योजना में क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि आयुष में के रिलेटेड जो है वर्क्स में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर सके, अपनी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड कर सके, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। तो ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका ये आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो आपका गवर्नेंस या फिर इवन एथिक्स के अंदर अगर पार्ट आता है उसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर, उन्होंने जो है एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है इम्पैक्ट लीडर्स इन द एरियाज ऑफ इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। तो इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस में क्या होता है कि
पहले तो इन्वेस्टर्स जो होते थे वो एक कंपनी को या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को किस जो है बेसिस पर जज करते थे कि वो कितने प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो निकाल रही है, ठीक है। लेकिन अब इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस का एस्पेक्ट भी उसमें डाल दिया गया है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का ही लगा लो आप, जैसे कि क्लाइमेट चेंज में कितना जो उनका रोल है, कितनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं, कितनी बायोडाइवर्सिटी लॉस में उनका कितना जो है वो रोल है, ठीक है। फिर ऐसे ही सोशल एस्पेक्ट, कितना वो अपने एम्प्लॉय सेफ्टी और हेल्थ के ऊपर खर्चा करते हैं, वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं उस कंपनी में, क्या इक्विटी इंक्लूजन को जो है वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही गवर्नेंस एस्पेक्ट, क्या कहीं कोई ब्राइबरी तो नहीं चल रही है उस इंस्टीट्यूशन में, करप्शन तो नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डाइवर्सिटी है उनकी या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 एस्पेक्ट भी जो है अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जज करने से पहले देखे जाते हैं। अब पहले जो है जब 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उन्होंने इन गाइडलाइंस को जो है वो वॉलंटरी रखा था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर। लेकिन अब इसको 2022-23 से जो है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक हर कंपनी को बताना पड़ता है कि कितनी क्या उनकी इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस का उनके एस्पेक्ट क्या है, ठीक है। उसको मैंडेटरी कर दिया टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए। So now let us see all these topics in English. So the first topic is social progress index. So this topic is important for your social and issues and governance both. So social progress index for the states and districts of India has been recently released by Economic Advisory Council to the Prime Minister Chairperson, Bibek Debroy. So of course it may have been released by the EAC to PM chairperson, but actually it is formulated by Institute for Competitiveness and Social Progress Imperative. Okay, so according to this index, Puducherry followed by Lakshadweep and Goa have achieved the top slots for personal freedom, choice, uh, shelter, water and sanitation categories. So this index is launched at the global level by Social Progress Imperative since 2013, and in this year India has been ranked 110th in that index. But in this Indian index, the cities like or districts like Aizol, Solan, and Shimla have emerged as top 3 best performing districts. If we look at the aspirational district program, then 27 out of 112 districts have scored above the national average. Almost 40% of J&K districts belong to high social progress category. So what is this index? So this index basically measures the country's social progress at national and subnational levels. There are several components, almost 12 components across the 3 critical dimensions of social progress, like basic human needs, foundations of well-being and opportunity. And these components derive the social progress index. So for example, in basic human needs, components like nutrition and basic medical care, water and sanitation, personal safety and shelter, these are analyzed. So similarly for other categories, foundations of well-being, opportunity, they have subcomponents as well. There are 6 tiers, in which the first tier of course shows maximum progress, very high social progress. In tier 6 it shows very low social progress. So what is the significance of this index? Of course it gives the broad picture of social progress in India, and it gives way for policymakers to make informed decisions. So the next topic is UNESCO tentative list. So this topic is important for your art and culture section. So Indian government has nominated Vadnagar in Gujarat, Sun Temple at Modhera, and rock cut sculptures of Unakoti in Tripura to the tentative list of UNESCO World Heritage Sites. So what is UNESCO? It's a specialized agency of UN headquartered in Paris, that is in France, and it was founded in 1945, and it works in 5 key program areas: education, natural sciences, social or human sciences, culture, communication and information. So the basic aim of this organization is to achieve the sustainable development goals by 2030, and it also aids in translation and dissemination of world literature, establishes and protects the world heritage sites of cultural and natural importance, and it basically acts as the bridge between the global digital divide also. So what are world heritage sites? So these are sites with outstanding universal value identified under the convention of 1972. There are 3 categories of sites. First of course is sites which are important for the cultural value, the cultural heritage sites. Second, there are sites which are important for their natural value, the natural heritage sites. But some sites would be
culturally as well as naturally important also, so they are categorized under the mixed heritage sites category. India has 40 world heritage sites, 32 which including 32 cultural properties, 7 natural properties, and 1 mixed site. If we look at the Sun Temple at Modhera, so it is of course in Gujarat. We discussed about it a few months back. This Sun Temple is located in at Pushpavati River, on the banks of Pushpavati River. It was built during the reign of Bhima I of Chalukya dynasty. It is built in Maru Gurjar architectural style, which emerged in West India, that is in Gujarat and Rajasthan during the Solanki dynasty reign. So this type of temple architecture consists of main temple shrine, that is a garbhagriha, a hall, outer hall or assembly hall, and even a sacred pool, that is called kund. This is an east-facing temple and it is built with bright yellow sandstone. So the next topic is Vadnagar. So this is a historic town which has been a continuous habitation for more than 2700 years. It was historically fortified. So it was a historically fortified settlement. It was a hinterland port also, and it acts and it served as the center for industries of shells and beads, etc. What is Unakoti? Unakoti is a northeastern region of Tripura, which is associated with Shiva worship, and it has towering low relief images in a unique style in rock cult, or it has the rock cult images. So the next topic is Bureau of Civil Aviation Security. This topic is important for your governance section. So Bureau of Civil Aviation Security has issued technical norms for new security technology to be incorporated to screen bags at airports. So this Bureau of Civil Aviation Security was set up as a cell in Directorate General of Civil Aviation 1978 on the recommendations of Pandey Committee, but later on it was reorganized as an independent department under Ministry of Civil Aviation in 1987. Basically, it lays down the standards and measures with respect to security of civil flights at international and domestic airports in India. It has 4 regional offices also: Delhi, Mumbai, Kolkata, and Chennai, and it aims to implement and monitor the and regulate the Chicago Convention standards in India. It also conducts surprise or dummy checks. It also has contingency plans and operational preparedness for various agencies. Through the it takes care of these standards or these operational preparedness of these airports through mock exercises. So the next topic is Digital India Awards 2022. This topic is also important for your governance section. So Smart Cities Mission has recently won the Platinum Icon in Digital India Awards 2022 for their initiative Data Smart Cities, empowering cities through data. So this award has been won by Smart Cities Mission under the data sharing and use of our socio-economic development category. This category emphasizes sharing of government data by ministries, departments, organizations, and this initiative has created a robust data ecosystem so that evidence-based decision making in cities can be made sure. So Digital India Awards are given by the National Informatics Center, and it recognizes digital solutions by government entities in realizing the Digital India vision. So what is the Data Smarts initiative? So it's a mission of smart cities mission, of course, and it harnesses the power of data for better governance, and it is being implemented by Ministry of Housing and Urban Affairs, and they have created a data ecosystem and cities to harness the power of data in providing effective governance. So the next topic is Arnala. This topic is important for your security section. Recently, Arnala ship has been inducted into the Indian Navy, and it is built under the anti-submarine warfare shallow watercraft project. It will replace the Abhay class anti-submarine warfare ships, and they will engage in anti-submarine operations. What is Arnala? Of course, it's a strategic island of which was there since Chhatrapati Shivaji Maharaj's reign, and this anti-submarine warfare project basically aims to detect and neutralize various underwater threats, and the ships under this project are having 80% indigenous content.
So the next topic is Ayush Swasthya Yojana. This topic is also important for your governance section. So Ministry of Ayush is running a scheme named Ayush Swasthya Yojana. It's a central sector scheme. It is having two components: Ayush and Public Health, and Center for Excellence. Basically, this scheme is about giving financial assistance to eligible individual organizations or institutes, so that if they are functioning in research and development activities of Ayush, they can upgrade their facilities, they can establish advanced medical health units in their vicinities, and basically the aim is to financially support the reputed institutions who are working in the field of Ayush. So the next topic is environmental social governance. This topic is important again for both your for rather your environment, social, and governance topic all. Indian Institute of Corporate Affairs has launched a program to create impact leaders in the fields of environmental social governance. So what is this ESG? So basically, earlier when you were analyzing the performance of any company, you were just looking at the how at the financial aspect of that company, how much profit it is making, what is the health of that company at financial level. But now the realm has been diversified. We are also the investors are also interested to see what is the environmental impact of that company, how they are functioning, how their product is or how their functioning is leading up to climate change, how much greenhouse gas emissions does that company emit, or is it causing any biodiversity loss or deforestation. Similarly, what is the criteria regarding their employee safety and health, working conditions, if there is any diversity or equity and inclusion in their company, and what is the data on their corporate governance, so that people can make an informed decision about the health of the company comprehensively. So these ESG norms were not compulsory in since it was launched in 2009 by Ministry of Corporate Affairs, but in since 2022-23, the Ministry of Corporate Affairs has made it mandatory for top 1,000 listed companies. Now they have to file the business responsibility and sustainability report, so that investors can make an informed decision about the company in which they want to invest, if that company is environmentally, socially, and at the governance level responsible or not. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.